फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये डोमिनिक कंसेप्ट पहले हमने देख चुके हैं गाइस। अगर आपको फिर से रिपीटेड कंसेप्ट को पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप लेट स्टार्ट करने वाले लास्ट यूनिट है, फोर यूनिट के कुछ 10 क्वेश्चन भी है जिसको हम हर बार की तरह हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व आउट किए, और सॉल्व आउट करने के बाद हमने उस पेपर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करे। ठीक है, एग्जाम पास में यार ये कैसे क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे से पढ़ोगे इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं। तो लेट्स टू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस एंड माय नेम इज सागर। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ गाइस। तो मैं इंजीनियर के साथ साथ आपके लिए कुछ नए नए नोट्स वगैरह लेकर आते रहता हूँ कि जिससे आप अच्छे खासे पढ़ाई कर सको, अच्छे मार्क्स ला सको, अच्छे इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप ज्यादा भटके ना इधर उधर, आप मेरे चैनल पे आ जाइए और वॉच करके देख के बेनिफिट लेके जाइए। और गाइस आए हो तो बस खाली हाथ मत आओ, लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अब लेट्स टू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस, कंटिन्यू। सो अब बात करते हैं सब यूनिट 4 की। यूनिट 4 में डीप लर्निंग पे क्या है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफाइन सीक्वेंशियल डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा, सीरीज डेटा। सीक्वेंशियल डेटा क्या है, रेफर टू डेटा विद द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर्स एंड ईच एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रीवियस ones, unlike a traditional tabular data where each row is independent. Sequential data has a temporary logical relationship between elements. Example include text sentence, speech signals, stock price movement, instant data, understanding the sequence of essential because changing the order and can change the meanings. ठीक है, वो क्या होता है, प्रीवियस डेटा को लेता है, प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हम नए डेटा को बनाते हैं और उसको सिग्नल्स फॉर्म पे, ट्रेडिशनल फॉर्म पे उसको फॉर्म करते हैं, राइट। टाइम सीरीज डेटा स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंशियल डेटा होता है जो वेयर ऑब्जर्विंग द रिकॉर्डिंग एंड रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब जो ऑब्जर्व करते थे रेगुलर टाइम इंटरवल को, अब रिकॉर्डिंग होती रहती है प्रीवियस डेटा को लेकर। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड डेली टेम्परेचर रीडिंग, जैसे डेली टेम्परेचर रीडिंग कैसे रिकॉर्डिंग होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, रीडिंग होती है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट प्राइस, स्टॉक मार्केट में कैसे कंटिन्यू चलती रहती है, मार्केट बढ़ा और नीचे गिरा, उसका मूवमेंट प्राइस से सारी चीजें मेंटेन होता है। सीनियर सेंसर डेटा इन टाइम सीरीज डेटा, द टाइम कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंडिंग पैटर्न एंड सिग्नल वेरिएशंस, राइट। तो ये सब अपना टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग होते रहता है। तो इस तरह के एग्जांपल बिटवीन पे देख सकते हैं सिक्वेंशियल डेटा को। और इट एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो कैसा है, डिजाइन टू हैंडल सिक्वेंशियल डेटा बाय मेंटेनिंग मेमोरी प्रीवियस इनपुट, अनलाइक feed forwards neural network where data flow in one direction and have connection data loop backs allowing information to pass over time. In RNNs जो है guys, the same network is applied repeated at each time step, at each hidden state and produce a new hidden state and output. Hidden state acts as a memory storing information about a previous input. Previous input. Previous input. Recurrent neural network. ठीक है, and output layer, recurrent hidden layers and input layers. So Harry and Hermione are friend dogs, loves the chances.
The recurrence allow RNNs to capture temporal dependency in the data. These are widely used in applications such as language modeling, speed recognition, time series prediction. However, standard aren't limited since the learning long-term dependency, which led to development of advanced model LSTM and GRL. How RNN process sequential data step by step. An RNN process sequential data one step at a time, maintaining a memory of previous input. At the first time step, the network taken the initial input and produced an output along. With an hidden state, the hidden state is then passed to the next time along with the next input. At each and subsequent step, the network combining the current input inputs and produce an output along with an hidden state. The hidden state is then passed through the next time step along with the next input. At each input subsequent step, the network combines the current input with the previous hidden state, producing a new hidden state and output. The process continues until all elements in the sequence are processed. The final output may depend on the previous input, allowing the network to capture pattern over time. For example, in a sentence, processing each word in a process. Sequential and network remember previous word to understand the context. They make RNN suitable for tasks where order to कॉन्टेक्स्ट यार इंपॉर्टेंट ठीक है वेनिसिंग ग्रेडियंट्स प्रॉब्लम इन आरएनएन वेनिसिंग ग्रेडियंट क्या होता है गैस वेनिसिंग प्रॉब्लम मेजर चैलेंज इन ट्रेनिंग आरएन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में बहुत बड़ा चैलेंजेस होते हैं वेनिसिंग ग्रेडियंट्स स्पेशली व्हेन डीलिंग्स द विद लॉन्ग सीक्वेंस ड्यूरिंग the training gradient propagate backward through time using a process called back propagations through times as the sequence length increases gradient may becomes very small. This happens because gradient are repeated multiple as by value less than one during back propagation. As a result, influence of early would become negligible and the network fails to long-term dependency. ठीक है, thus limit and ability of standard RN to capture information from distant time of step. RN क्या होता है कि वेनेसी ग्रेडियंट पे RN क्या होता है sharing the same parameter at all time step. Occur in times series with a long time dependency. Feed forward, vote out, feed forward. How to RNA process sequential data step by step. RNA process sequential data one step at a time, maintaining a memory of a previous input. After first time step, the network take initial input and produce the output long. RNA process sequential data one step at a time, after maintaining a memory of previous input. At the first time step, the network take an initial input and produce an output along with a hidden state. The hidden state is the pass through the next time it step along with the next input, and each and subsequent step they are recurrent and combine the current input with the previous hidden state to produce a new hidden state and output. This process continues until all elements in the sequence are present. The final output may depend on a previous input, allowing the network to capture patterns over time. For example, in center processing, which word processing sequential and the network remember previous word to understanding the context, the make RNA suitable for tasks where order and context are important. Managing gradient problems, specifically इसमें गाइस इंटीग्रेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड आरएम लिमिटेशन लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म memory network are a special type of R and design overcome the vanishing gradient problems and capture long-term dependency. This activity is by rendering a more complex internal structure with memory cell and gates. LSTM थ्री मेन गेट्स होते हैं इनपुट गेट होता है ये हो गया और फॉरगेट गेट्स ये और आउटपुट गेट ये ठीक है द फॉरगेट डिसाइड द डाटा इन्फॉर्मेशन should be removed from memory. Forget के information remove करना memory से. The input gate determines when the information should be added. मैं input data का edit करना memory से और output और get control the information pass करते हैं next step और output क्या कहते हैं control pass करते हैं next step के लिए. ठीक है ये अपना हो गया. उसके बाद में LSTM forget और cell gates and और old cell gate old cell output new cell gate new cell output. RNN unit LSTM unit. ठीक है this data ना LSTM important information long period while discarding relevant and involving long sequence. Compare LSTM and GRU architectures. LSTM will both advanced type of current neural network design to overcome the limitation of standard RNN or especially the vanishing gradient problem, while both are effective to capture long-term dependence and different architecture complexity. LSTM complex input gate or output gate, the gate to control the flow information and out memory gate. Following this and data and important sequence, they make every whole complexity. GRU get a different networks to simplify the combining the input and forget getting single update get and using reset get the reduce the number of parameter make a GRF faster while still maintain the performance. Forget the select input get output get reset get update getting GRU LSTM versus GRU becomes get simple LSTM and terms. Explain text generation you're using RNN and LSTM.
Text generation application is sequence model where a neural network learns to generate text one word at a time based on the previous word. RNA HTML commonly used for the task because they can remember past context and generating meaningful sequence. The process began by training the model on a large dataset of text. The model learned patterns. For example, if the input the weather is a model may generate a word like a sunny or cold based on training over time, it produces complete sentence in the paragraph. If generally usage applications such as chatbot, content creation, and the language translation, HTML particularly effective because they can maintain context over a longer sequence, resulting more coherent and meaningful text. Discuss an RNN sentiment analysis. Sentiment analysis is the task of determining whether a piece of text explains a positive, negative, neutral sentiment. RNN HTML will be suited for the task because they can understand the sequence and context of word. Sentiment analysis, the model processes text word by word and capture the meaning based on the sequence. For example, sentence, the move was not good. It has a negative sentiment. So the word good is a positive. We analysts can understand such content because they consider previous word. Compared to traditional methods which rarely on a manually defined features. RNN-based approach automatically learn features from data from makes them more accurate and adaptable. ठीक है? However, analysts have limitations. They may struggle with a very long sentence or complex structure. Alstom improve performance by handling long-term dependency. What sentimental on model machine translation is very important. Sequence model play a crucial role in task and machine translation of speech present. Where including output both sequence. This is a task for understanding context relation between the element and sequence. Context relation बताता है element and sequence. When machine translation कहते हैं sequence model converted entry from one language to another. There is typically using encoder, decoder, encoder, bus, then percentage. Representing the while decoder and translation based on the representation. Or process the sequence geometry map the corresponding words model for the capture temporal dependent data especially estimate whether is nice those minister with estimate product change of the forward we got English input sequence. Design a sequence modeling solution using RNLSTM. Design a sequence modeling solution involves selecting an appropriate model, approving the data, defining training and evaluation strategy. The first step in choosing between RNLSTM and GRO based on complex task. For most real-world application, LSTM prefer because it handles long-term dependency effectively. Next, and data represent an important step for data techniques, tokenization and word embedding use convert word into immutable data. For time series data normally applied to ensure consistency. The training strategy involves selecting a preferred function, optimize along within the tuning parameters such as learning rate, batch size. Regular technique may be used to prevent overfitting. Evaluation methods depend on the task. For classification problem accuracy event scores are used while the sequence regeneration task methods such as a BLO score may be used. A well design sequence model can be applied for various real world problems like tax and predictions, recognition, and recommendation system. By carefully setting each component, the system can achieve a high consistent reliability. Okay? It's a concept, very easy concept. I hope you will be understanding on the concept. Thank you so much for watching the video. It's been very